Hi everybody. So welcome to this video. This is one of the first few videos that I'm launching as part of network penetration testing series. The first video is going to be about the SIP protocol, and we'll be talking about SIP both in Hindi and in English. So I'll be talking about a theory first, and then in the as the video progresses, I'll be talking about the tools that you can use and how to enumerate and exploit it. So this would be extremely useful for people who are like beginners. And I have accumulated a lot of things together so that you don't have to go out and, spend a lot of time on sites. So now because you'll have the background that is necessary, you can like make use of any articles, whether it be it for beginners or for professionals, and hopefully make use of this. So what is SIP, first of all? So SIP stands for Session Initiation Protocol. Now that's just the name, right? So where is it used? So Session Initiation Protocol is typically used when you like make or manage calls. Now calls can be both audio and video calls. And just to extend it a bit, even some instant messaging apps, they make use of the SIP protocol. Now, if you see, I have taken an example that Microsoft Teams uses SIP protocol to establish audio and video calls and to also manage call setup. Now, let's talk about the ports, right? So when you scan, you'll come across two ports, which is 5060 and 5061. Now, when it comes to these ports, like 5060 is going to be pure SIP without encryption, and 5061 will have TLS setup. So one test case becomes the one test case that you can try on is port 5061 and see like which ciphers are supported, and secondly, if the certificate is valid or not. So if an invalid certificate or an expired certificate is being used, then in that case, what will end up happening is you'll not be able to establish a secure connection. So it becomes more of an availability issue there. Now talking about the SIP request methods. All right. So you might have been testing web apps on APIs for a long time. Now, when it comes to HTTP protocol, there are certain requests like get, post, trace, and things like that. So similarly, SIP also has these requests. And there are about 14 requests that I have like mentioned here, like invite, acknowledge, buy, cancel, register, options, PRAC, subscribe, notify, publish, info, refer, message, and update. Now we'll come to know like if we can use some of these methods for our enumeration purposes. But as of now, you can mug them up and even try to remember those. Like they might come up in an interview question or something like that while testing for SIP protocols. Similarly, when you send a request through HTTP protocol, there is something that gets returned. So on the first line, you will see the status number and the status code, like 200, okay. So similarly, SIP also has various response methods. Now, if you see here, 1XX would be informational requests, such as 180 is for ringing, 200 is for success codes, 300 would be for redirection, 403 would be unauthorized, 500 internal server errors, and 6XX would be for global failures. So let's take an example. So let's say you are trying to call. So what you would initially do is to try to set up a session, you will send an a request with the invite method. If the server responds or the receiver responds 200, okay, you will send an acknowledge and the session is established. Now you can do your communication. If you want to end it, you send a buy request and it will return 200, okay. So these are transactions that are happening. Now let's talk about enumerating the ports and the service itself. Now, you might be super familiar with Nmap. So let's start with Nmap. So you can type in, because these ports will be active on both TCP and UDP sides. So you can also use TCP and UDP scan to scan for 5060 and 5061. Now let's talk about SIP methods. Now, sometimes you can enumerate methods, and based on those methods, you can try to find out like what is the name of the actual server that is being used and what is the version in use. So you can use SIP methods. You can try to brute force users because now I'll be telling about that later on. So
That's for upcoming, like in short time I'll be telling about this. Then there is SIP call spoof. So what happens if you try to spoof a call? What would the user do? Right? So this is what like the script does. And then there's a brute force method, which is SIP brute. So it is used for brute forcing password. But you'll typically not use this. I'll tell you a better way that you can do in this video. So let's talk about enumeration tools. Now, first of all is SIPSAC, and there is SIP. So you can try to grab banners. But if you can use Nmap, why use these tools? Now, there is another set of tools that you can use, which is SIPVicious. Now, you can use SIPVicious Python script. And if you are on Kali, you can use SIPVicious. If you install this, you'll get a list of tools that in your arsenal that you can use for enumeration of SIP protocols. So the first is SVMap. So what does SVMap do? So SV and then there's map. So I think it is like some form of short form for enumeration. So if you use SVMap, you will see that it lists the SIP devices in your network along with the port in which it is active, the user agent, and it might also have a fingerprint. Then after you have enumerated, which by the way, you can also completely do this with the help of Nmap. After you have enumerated, you can enumerate extensions. So what are extensions? So a lot of times in an organization, if an organization has a lot of employees, they might have their own SIP services running in their organization. And each of those users will have a SIP account assigned to them. It might contain the extension, as you can see, the username, and then the password and the address of the SIP server. A lot of times what happens is when you're inside a network or even from outside, you might see that there is no password being used for authentication or there's no sort of authentication enabled. So in that case, only the username is required. And how do you enumerate extensions? Now, this is where methods come into play. Now, you can send requests with a lot of different methods and try to see like if those extensions are valid. So for example, I'll not go through netcat route because in netcat you'll have to write the entire request yourself. Otherwise, what you can do is you can just type in svvar followed by an extension range that you want to try, a target that you have along with the method. So method could be invite, register, options, and invite. Just a small tip, like if you're not using the Python version and if you're just using svmap that comes with Linux, if it is able to find a valid SIP device, it will automatically start svvar to enumerate all the extensions that are there. After that, if you see like authentication as weird, or I'm not sure how to pronounce it, it probably means that there is no sort of authentication enabled there. So uh, you can like try to do all sorts of things with that because there's no authentication at all. Then what happens if there is a hash returned to you? If you have a hash returned to you, you can just try the SIPCrack utility along with the user list. Along with the list of password. And then if you have the hash, you can use SIPCrack to actually crack the password. And if you have a PCAP file, let's say you are inside a network and you are able to capture a file, a packet capture file uh, of a SIP protocol that's being initiated while the user is trying to initiate a call. You can use that capture file with SIP dump to extract the hashes and then SIP crack to actually crack those hashes. So now let's begin with the Hindi version of this video. So hi everybody. So let's talk about SIP. SIP का क्या मतलब हो? SIP is a short form for Session Initiation Protocol. तो ये प्रोटोकॉल कहाँ काम पे आता है? So प्रोटोकॉल कहाँ काम पे आएगा? जैसे अगर आप एक नेटवर्क में हो और आप VoIP मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हो, कहाँ पे लेट्स से अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जनरली माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज करती होगी. सो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी SIP प्रोटोकॉल का यूज करती है. अपार्ट फ्रॉम दिस SIP का यूज इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स में भी बहुत यूज होता है. सो जनरली SIP का यूज कहाँ पर होगा? SIP का यूज होगा to create a call and manage a call. So it would involve creating call so that the call continues and then dropping the call entirely. So SIP TCP और UDP भी दोनों पे ऑपरेट करता है. SIP की दो पोर्ट्स जनरली आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो इट विल बी 5060 एंड 5061.
तो 5060 होता है विदाउट टीएलएस। इसका मतलब देर इज नो इंक्रिप्शन एट ऑल। सो अगर आपके पास इफ यू हैव अ पैकेट स्निफर और योर नेट डज नीड स्निफिंग द ट्रैफिक, तो वहां पर बहुत काम आएगा आपके, एंड विल टॉक अबाउट दैट आगे जा करके। एंड देन देर इज 5061। तो 5061 कहाँ पे यूज होता है? टीएलएस में। मतलब ये इंटरप्ट चैनल्स टनल के थ्रू आपकी कम्युनिकेशन करवाता है। सो जनरली अगर आपको इन्यूमरेट करना है तो nmap डैश पी 5060 5061 अलॉन्ग विद आईपी। अब जनरली अगर हम मेथड्स की बात करें, तो अगर हम HTTP प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो वहां पर भी कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे गेट, पोस्ट, ट्रेस, ऑप्शंस, राइट। तो सिमिलरली SIP के अंदर भी कुछ कुछ मेथड्स होते हैं जिससे हम कॉल को सेशन इनिशिएट करते हैं, उसके बाद ड्रॉप करते हैं, and काफी और चीजें हैं। तो लगभग लगभग 14 मेथड्स होते हैं, लाइक इनवाइट, एक्नॉलेज, बाय, कैंसिल, रजिस्टर, ऑप्शंस, up till info, refer, message, and update. Like, and then next coming to SIP response methods. So if there are like HTTP as when you initiate a HTTP request, तो server क्या करता है? It returns a status code and a status number in the first line itself, right? Like 200, okay. The 200 is the number and okay is the code. So यहाँ पर भी there are response methods like 1xx up till 6xx, which is global failure. सो यहाँ पर भी सिमिलर मेथडोलॉजी है कि यहाँ पे 1xx वाले जो है इंफॉर्मेशनल होते हैं, 2xx इज फॉर सक्सेस, 3 डायरेक्शन वाले 3xx, 4xx वाले रिक्वेस्ट, और 5xx वाले सर्वर फेलियर्स। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने पहले मेथड की बात करी थी इनवाइट। तो लेट्स से आप कॉल कर रहे हो तो एक इनिशिएशन रिक्वेस्ट जाती है इन द फॉर्म ऑफ इनवाइट मेथड। सर्वर 200 ओके बोलेगा, एंड आप एक्नॉलेज करोगे तो एक कॉल स्टैब्लिश हो जाती है, तो सेशन स्टैब्लिश हो जाता है। एंड फिर अगर आपको सेशन बंद करना है तो यू सेंड अ बाय रिक्वेस्ट, एंड देन द अदर पार्टी विल सेंड 200 ओके, एंड देन इट क्लोजेस। अब लेट्स से कि हमें न्यूमरेट कैसे करना है, राइट। तो आप nmap का यूज कर सकते हो सबसे पहले, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से फेमिलियर होते हैं। सो SIP मेथड्स टू सी कि कौन से मेथड्स इसमें इनेबल्ड है, उसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। अगर आपके पास आपको यूजर से न्यूमिनेट कर रहे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप दूसरे टूल्स का भी यूज कर सकते हो। तो SIP इनम यूजर्स है जो आप जिसका आप यूज कर सकते हो। कॉल स्पूफ, ये बस देखने के लिए कि अगर आप एक कॉल स्पूफ कर रहे हो SIP की हेल्प से, बट इफ अगर वो ओपन है तभी आप कर पाओगे, विदाउट ऑथेंटिकेशन अब वो ऐसी कॉल नहीं लगा पाएगा। एंड देयर इज SIP ब्रूट, तो वो हम बात करते हैं आगे। अगर आपको सिर्फ बैनर ग्रैब करना है तो आप सिपसेक का यूज कर सकते हो, या फिर SIPP टूल का यूज कर सकते हो जो लिनक्स में आता है। अगर आपको इन्यूमरेशन करना है तो आप nmap से तो कर ही रहे हो, देन देयर इज अनदर सेट ऑफ टूल्स लाइक विच इज कॉल्ड सिपफिशस। सो आपको पाइथन स्क्रिप्ट मिल जाती है, अगर आप लिनक्स में हो तो आप sudo apt install सिपफिशस कर सकते हो, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ टूल्स लाइक svmap, svvar, सो वो सब, एंड svcrack। सो वो सब आप यूज कर सकते हो टू इन्यूमरेट और उसके बाद क्रैक द हैशेस। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपके पास लिनक्स नहीं है तो आप पाइथन यूटिलिटीज का यूज कर सकते हो, तो svmap.py फॉलोड बाय टारगेट नेम। मैं आपको svmap का एक फायदा बता देता हूँ। अगर आपके पास पाइथन स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो वो बेसिकली क्या करेगा, वो इन्यूमरेट करने में हेल्प करेगा डिवाइसेस को, एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपके पास SIP एक्टिव है उस पोर्ट, किसी एक पोर्ट पे, लाइक यहाँ पे 5060 पे एक्टिव है इस IP पे, तो नेक्स्ट मेथड होता है टू चेक फॉर एक्सटेंशंस, वैलिड एक्सटेंशंस। तो काफी बारी जब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहाँ पे काफी सारे यूजर्स होते हैं, तो एक लगभग लगभग हर एक यूजर को एक एक एक्सटेंशन दे दिया जाता है। एंड एक्सटेंशन का क्या मतलब हुआ? इट विल कंटेन यूजर नेम, पासवर्ड, एंड SIP सर्वर। तो वो हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, उसको इन्यूमरेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो आप कैसे करोगे? वो आप कर सकते हो मेथड्स की हेल्प से। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, svvar.py, यहाँ पे एक्सटेंशन की लिस्ट पास करी 100 to 200 अलॉन्ग विद टारगेट नेम, और डैश m मतलब मेथड। सो आप इनवाइट यूज करो, रजिस्टर यूज करो, जनरली रजिस्टर और इनवाइट हो जाना चाहिए, बट आप दूसरे भी ट्राई कर सकते हो, राइट। आप उसके बाद जब ये हो जाता है, अगर ऑथेंटिकेशन में वियर्ड आए, मतलब समझ जाना कि वो पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन है, मतलब वहाँ पे, सॉरी, पासवर्डलेस वुड बी इनकरेक्ट टर्मिनोलॉजी हियर, बट वहाँ ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड नहीं है इसका मतलब। सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू। बट अगर इफ यू हैव बीन एबल टू क्रैक, इफ यू हैव हैशेस समहाउ, अगर आपके पास किस तरह हैशेस आ गए, कैसे भी आ सकते हैं। अगर आप इंटरनल असेसमेंट में हो तो अगर 5060 पे ओपन है तो आप, मतलब वो सब कुछ प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है, तो आप एक नेटवर्क स्निफर ऑन कर दो, एंड यू विल सी लाइक डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन एंड अदर सॉर्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन बीइंग यूज्ड। और वहां पे अगर आपके पास हैशेस है तो आप सब क्रैक का यूज कर सकते हो, एंड आपको बट एक वर्ड लिस्ट चाहिए होगी आपको टू टू मेक टू गेट पासवर्ड फ्रॉम दैट हैश। अगर आपके पास पीकैप फाइल है तो अगेन सिर्फ क्रैक है। SIP डंप की हेल्प से आप
पैकेट कैप्चर फाइल से हैशेस डंप कर सकते हो, एंड अगेन से क्रैक से आप क्या कर सकते हो, एक हैश से प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड आप निकाल सकते हो. सो होपफुली आपको ये वीडियो सही लगी होगी, एंड लेट मी नो लाइक इफ देयर आर अदर प्रोटोकॉल्स दैट यू वांट टू कवर. I'll be covering a whole lot of protocols in this video series, so stay tuned.